બુધવારે સાંજે દિલ્હી એનસીઆરમાં અચાનક વાદળછાયું વાતાવરણનો માહોલ બદલાઈ ગયો। દિવસભર તીવ્ર ગરમી અને ભેજ બાદ મોડી સાંજે ભારે પવન સાથે કરા પડ્યા। આ જોરદાર પવન અને વરસાદે દિલ્હી એનસીઆરના ટ્રાફિક પર બ્રેક લગાવી દીધી હતી। વિજય ચોકમાં ભારે વરસાદ સાથે કરા પણ પડી રહ્યા છે। રસ્તાઓ પર સફેદ પથ્થરો પડતા જોવા મળી રહ્યા છે, તો હાલમાં રસ્તાઓ પર વાહનોની ગતિ ઠપ થઈ ગઈ છે। તોફાનને કારણે ઘણી જગ્યાએ ફ્લેક્સ બોર્ડ અને હોર્ડિંગ્સ પણ પડી ગયા છે, પરંતુ કોઈ જાનમાલના નુકસાનની કોઈ માહિતી નથી। એનસીઆરના નોઈડામાં વાવાઝોડાનો કહેર જોવા મળ્યો હતો, તો નોઈડાના ઘણા વિસ્તારોમાં વીજળી ગુલ થઈ ગઈ છે। દરેક જગ્યાએ અંધારપટ છવાઈ ગયો છે, તો વૃક્ષો પડવાના પણ અહેવાલો છે। तो आज अंगे વધુ વિગત આપી રહ્યા हमारा संवाददाता वैभव। जी वैभव, बताइए क्या माहौल जानने को मिल रहा है आपको? बिल्कुल बतेज, देखिए पिछले 2 दिनों से जो है दिल्ली एनसीआर के अगर तापमान की बात की जाए लगभग 40 डिग्री के ऊपर था, लेकिन आज शाम को जो है भारी तेज बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि हुई है। तो ऐसे स्थिति में कहीं न कहीं दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर की जो यातायात पे उस पर रोक तो धीमी हुई है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए तो जो पिछले 2-3 दिनों से जो गर्मी थी उससे राहत मिली है। वैसे अगर देखा जाए तो इन जो तेज हवाओं के साथ जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, हालांकि उसमें जो है काफी दिल्ली मेट्रो को प्रभावित हुआ है, साथ ही साथ यातायात प्रभावित हुआ है और दिल्ली में छुटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। हालांकि 3 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कई वाहनों को भी जो पेड़ गिरे हैं, वो जो होर्डिंग थे वो उसके ऊपर गिरे हैं, तो क्षति कुछ गाड़ियों को भी हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में मौसम अभी सुहावना देखने को मिल रहा है। जी वैभव, शुक्रिया जानकारी देने के लिए।